Okay, so greetings for the day, students. This is Professor Rahul Mukherjee. We are with the second chapter now in your first unit, that is first module of accounting for managerial decision, and the chapter name is comparative statement. Okay. Comparative financial statement mainly talks about the same format: vertical income statement or profit and loss account and vertical balance sheet. The difference is just that a technique to find the values in it is something which is new. So here the point is mainly 2 years data will be given to you. One will be of previous year and one will be of current year. Previous year को हम सब में last year भी कहेंगे, बेस ईयर भी कहेंगे, बिकॉज उसके हिसाब से ही हमें कंपेरेटिव परसेंटेजेस ढूंढने हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. Okay, so 2 years data will be given. You will be comparing the current year with the previous year. Whatever difference you get, you will write in the next column, that is third column, difference in amount, and the next column, fourth column, will be difference in percentage. Okay, so there are total 5 columns mainly. One, the particulars remains the same. Your profit and loss account, that is income statement or balance sheet format, remains the same. जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर वर्टिकल बैलेंस शीट या वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में बताया. Just the difference is, as you can see in the picture right now, which is solved by me for you all, a particular sum. Okay, and also a video has been sent to you which explain you what will be given in comparative statement and how you will solve it. So let's move on with the sum, a new question, a fresh question for you all expected in your exam. So in the question, as you can see, that what is given sales. In the question, as you can see, that what are the terms that is given: sales, cost of goods sold, the elements of cost of goods sold like opening stock, purchases, wages, factory expenses. We take the total and we deduct finally all those total amount from the sales, and we get gross profit that you can see here. So the years are 2019-2020 in the sum. In the books of Amit Limited, comparative financial statement, or you can say comparative income statement or comparative profit and loss account for the year ended 31st March 2020. So you can see as the sales amount 1,80,000 in 2019 and 1,84,000 in 2020. So आप जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में बताया था कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर दैट इज 4,000 into 100 डिवाइड बाय द ओरिजिनल अमाउंट, दैट इज बेस ईयर अमाउंट 1,80,000, दैट इज 0.22%. मतलब 0.22% से आपका सेल्स ये साल बढ़ा. बिकॉज मैंने आपको शुरू में कहा था मैं एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा. So this is why corporates actually have comparative financial statements to check what better they have done as compared to previous year. Costs कम हुए हैं क्या, profits या sales बढ़े हैं क्या, and so on. Cost of goods sold, if you see the total amount, you see 2 lakh से 1,76,000 हो गया current year में. So 24,000 से कम हो गया है, and therefore our formula remains the same. Current year amount minus previous year amount. So we get negative 24,000. So don't worry, that is not a negativity for the company. That is actually a good thing for the company, that the costs have gone down. Okay, the initial costs of the company has gone down, because of which you can see in the attachment या in my solving that gross profit उस हिसाब से बढ़ा है. ठीक है, ठीक है. माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम करते हैं as usual as per the format. Gross profit you can see 26,000 से 52,000 हो गया in the current year, because of which it is 100% increase. 26,000 increase हुआ है in gross profit. So 26,000 into 100 divided by the base year amount 26,000, you get as 100%. So that clearly in comment part, ऐसे सम्स में आपको कमेंट करने को कहा जाएगा. So in the comment ऐसे सम्स में आपको कमेंट करने को कहा जाएगा. So in the comment part you can write all these things जो आपको दिख रहा है अकाउंटिंग में होते हुए कि प्रॉफिट्स बढ़े हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंपनी हैज गॉन डाउन. सेल्स उतना नहीं बढ़ा है, 4,000 से ही बढ़ा. मूविंग अहेड विद द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग देयर. यू कैन सी ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस. एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस 8,000 से 6,000 हुआ है, जो कम हो गया है. सेलिंग एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ गया है 4,000 से, नॉट अ बिग नंबर. ठीक है,
टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16,000 से 18,000 हो गया, which is a 2% hike, 12.5%, not that much, ठीक है. बट वो हिसाब से कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ा है, 100%. कमिंग डाउनवर्ड्स यू सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 से 34,000 हो गया, सो ऑलमोस्ट 240% इंक्रीज. 24,000 is the difference into 100 upon the original amount 10,000 operating profit. We get 240% increase in operating profit, and that is too much. Great for a company. Finally we come to non-operating income, which is interest received. 20,000 था और इस साल कुछ नहीं है, so 20,000 से हम नेगेटिव में गए, इन द सेंस डिक्रीज हुआ है, कुछ अर्निंग्स नहीं हुए, 100% नेगेटिव. नो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिस ईयर. देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं. सो 2000 पिछले साल भी था, 2000 ये साल भी है, सो नॉट एन इशू. फाइनली वी कम टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड वी गेट टू सी द अमाउंट्स आर 28,000, 32,000, 4,000 इंक्रीज ही हुआ है, गुड फॉर अस, ठीक है. 4,000 into 100 divided by 28,000. I think the calculation part has become faster. I think so the calculation part has gone fast and quite clear for you all. Finally we land down to deducting the interest, and we get net profit before tax. The amount is 22,000 and 24,000, so 2,000 का increase इसमें भी है. Finally the taxation amount brings the profit, the net profit to 0. But remember, overall if you go to see 2020, for this Amit Limited has performed slight better as compared to 2019, and overall comments is you can give is positive. Overall you can give a positive comment for this current year, and this is how comparative income statement helps us to analyze the difference between the performance of the company in terms of business in both the years, ठीक है. एंड परसेंटेजेस कैसे ढूंढना है आपको पता चल गया होगा. चेंज इन अमाउंट इनटू 100 डिवाइड बाय द बेस ईयर और प्रीवियस ईयर और ओरिजिनल ईयर, व्हाटएवर यू से, ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट. In next video I will see you all with example on comparative statement but in balance sheet. Stay tuned for the same. All the best.